गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया ओमान रिलेशनशिप। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओमान के जो सुल्तान है वो ऑफिशियल विजिट पर थे इंडिया पे, और इस विजिट के दौरान ओमान इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड $300 मिलियन का जो था उसको लॉन्च किया गया है, जो कि 50-50 जॉइंट वेंचर होगा एसबीआई के बीच में और ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच में। इसी दौरान जो है ये पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर की गई है कि ओमान जो है वो यूपीआई को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी जो है उसको भी जो है डिस्कस किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अगर हम इंडिया और ओमान का बायलैटरल रिलेशनशिप देखें तो इंडिया जो है ओमान जो है दोनों एक स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं एक दूसरे के, और इम्पॉर्टेंट ओमान हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरलोक्यूटर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फोरम्स में। ठीक है, अब देखते हैं हम कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो 1955 में एस्टेब्लिश हुए, जिसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल पर 2008 में अपग्रेड कर दिया गया। और इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ इंडिया जो ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग के थ्रू चलता है। और बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में $5.93 बिलियन रहा है 2019 और 20 के आंकड़ों के हिसाब से। लगभग 6.25 लाख के आसपास इंडियंस जो हैं ओमान में रहते हैं, और जो ओमान का बेसिक लॉ है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप को रिकॉग्नाइज करता है एज अ राइट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया मालदीव्स वाटर पैक्ट। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया के साथ जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का जो एग्रीमेंट है उसको अब आगे रिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है, बेसिकली शिप्स कैरी आउट करते हैं इनको हाइड्रोग्राफिक सर्वेस को, जिससे सोनार टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए फीचर्स ऑफ अ वाटर बॉडी जो है वो मेजर किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम यूएस नोवा के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये सर्वे होते हैं ये वाटर डेप्थ को मैप करने के लिए, सी फ्लोर और कोस्ट लाइन की शेप को देखने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शंस को की लोकेशन को देखने के लिए, या फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ देखने के लिए जो है हेल्पफुल रहते हैं। ये सर्वेज जो हैं एफिशिएंसी और सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को भी जो है इंश्योर करते हैं। अब यूएन की स्टडी के हिसाब से लगभग 50% ऑफ कोस्टल स्टेट्स का कोई भी हाइड्रोग्राफिक कैपेबिलिटी नहीं है, और 25% जो हैं उनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं। तो जितनी जो 25% है उनमें ऑफकोर्स इंडिया भी आता है। तो इसीलिए जो है जिनके पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं उनके साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने का एक इमेंस स्कोप रहता है हाइड्रोग्राफी में। तो अब जो है पीएम मोदी ने 2019 में ये मालदीव्स के साथ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट के टाइम पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उसी टाइम पर जो है इंडियन नेवी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस जो है इनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ था कि इनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। इंडिया जो है मालदीव्स को हाइड्रोग्राफिक फैसिलिटीज़ विद इन द देयर डिफेंस फोर्सेस जो है इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प कर रहा था, और कर रहा है रादर अभी भी। और नेविगेशनल चार्ट्स बनाना, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स जो हैं उस एरिया के बनाना, इन सब के लिए सर्वे में भी इंडिया एक तरह से हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ट्रेनिंग दी जा रही है जो इन पर्सोनल को, एमएनडीएफ पर्सोनल को, ताकि वो सर्वे इक्विपमेंट को यूज़ भी करना सीख सकें। अब मालदीव जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो इस एंड पैक्ट को एंड क्यों कर रहा है? अब प्रेसिडेंट सोले जो थे, जो एम डी पी के 2018 से 2023 तक, वो तो फेवरेबल थे इंडिया को। लेकिन जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं मालदीव्स में पीपीएम पार्टी के, मोहम्मद मुजू, वो थोड़े प्रो चाइना है। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन के टाइम पर भी उन्होंने बोला था कि जितनी फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं उनको हम सस्पेंड कर देंगे या फिर टर्मिनेट करेंगे अगर वो उनको उनके हिसाब से अगर वो मालदीव्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेल कौशल विकास योजना। इकोनॉमी गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे मिनिस्टर ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि जो 26,000 कैंडिडेट्स जिनको रेल कौशल विकास योजना के अंदर जो है स्किलिंग की गई है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी रेलवे के अंदर जॉब्स में। ठीक है, तो रेल कौशल विकास योजना है क्या? इसको इंडियन रेलवेज़ ने सितंबर 2021 में लॉन्च किया था। नोबल ऑब्जेक्टिव है इसका कि टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेड्स, और नीड्स ऑफ कैंडिडेट्स विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 35 को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, और
फोकस रहेगा इंडस्ट्री रेलेवेंट टेक्निकल ट्रेड्स सिखाने में, और ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं अलग अलग लोकेशंस में अक्रॉस द कंट्री खोले गए हैं, और ट्रेनिंग मॉड्यूल जो हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जो है जो इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री की और एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं उसको जो है वो एड्रेस कर सकें। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, जो कि बाद में ऑफ कोर्स उनको जॉब एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सूरत डायमंड बोर्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है उन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब जो है सूरत डायमंड बोर्स जो है वो इनाग्रेट किया है। ये खजोड़ विलेज नियर सूरत में लोकेटेड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब है। इवन पेंटागन जो इससे पहले सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा है ये। ग्लोबल सेंटर बन चुका है ये एक ट्रेडिंग का, रफ और पॉलिश्ड डायमंड्स से रिलेटेड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है। लगभग 15 फ्लोर्स हैं इसमें, एंड इन एडिशन टू 9 ग्राउंड टावर्स। और ये कंट्री का लार्जेस्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस भी है। ठीक है, और ये पूरी बिल्डिंग जो है वो इको फ्रेंडली है। कटिंग एज रूफ टॉप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इस पर लगाया गया है ताकि इसकी जो है और ऑफ कोर्स रेडिएंट कूलिंग सिस्टम भी इसमें यूज़ किया जा रहा है ताकि जो है एनर्जी जो है इसका फुटप्रिंट सबसे कम रहे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू पोस्ट ऑफिस बिल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा से पास होने के बाद पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो है वो लोकसभा में भी कंसिडरेशन के लिए लाया गया है। ये बिल जो है 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 को रिप्लेस कर रहा है या रिपील कर रहा है। अब इसको लाने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जब पहले पोस्ट ऑफिस का जो एक्ट था 1898 का, उस टाइम पर तो क्या होता था कि सिर्फ जो है पोस्ट ऑफिस सिंपल मेल डिलीवरी करते होते थे, लेकिन अब जो है उनकी सर्विसेज एक्सपैंड हो गई हैं। बहुत तरह की सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज देते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए एक न्यू लॉ लाने की ज़रूरत पड़ी है। तो इस बिल में सेक्शन 9 कहता है कि अगर जो है किसी भी पोस्ट ऑफिसर को ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरसेप्शन कर सकता है, ओपन कर सकता है, डिटेन कर सकता है किसी भी आइटम को, अगर लग रहा है कि स्टेट सिक्योरिटी खतरे में है तो। ठीक है, पोस्टल आइटम्स को जो है कस्टम्स अथॉरिटीज़ को भी दिया जा सकता है अगर शक है पोस्टल ऑफिसर्स को तो। सेक्शन 10 कहता है पोस्ट ऑफिस और उसके ऑफिसर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर कोई भी लॉस या रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है, डिले हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इन इश्यूज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अनटिल और अनलेस इसके लिए स्पेसिफिकली रूल्स बनाए हों तो। ठीक है, पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस भी जो हैं, बहुत सारी पेनल्टीज़ 1898 एक्ट की जो है उनको रिमूव कर दिया गया है। और अगर एक न्यू ऑफेंस लाया गया है कि मतलब अगर कोई चार्जेस नहीं पे करता है पोस्ट ऑफिस के, तो उसको ऐसे जो है वो ट्रीट किया जाएगा जैसे लैंड रेवेन्यू जो है वो ड्यू है उनसे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्सक्लूसिविटी थी पोस्टल इंडस्ट्री में उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, और पहली बार जो है प्राइवेट कोरियर सर्विसेज को भी जो है इस बिल के अंडर लाया जा रहा है। अब एनालिस्ट कह रहे हैं, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस बिल को, कि ये तो बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजंस को अभी भी कंटेन कर रहा है। मतलब पोस्टल ऑफिसर्स की जो पावर्स आप देख रहे हो, ऊपर से जो है लैंड रेवेन्यू जैसे आप जो है एरियर की तरह इसको आप ट्रीट करोगे, कोई भी पेनल्टी है, और पोस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो आप तो इसको कॉलोनियल एरा के लॉ की तरह ही ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। गवर्नेंस, साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट की गई है, जिसमें कि इनोवेशन और रिस्क दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो अगर हम देखें कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, इसमें मिटिगेट रिस्क करने की बात की जा रही है एआई सिस्टम्स में, इक्विटेबल एक्सेस देने की बात की जा रही है, रिकोगनाइज किया गया है इसमें कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और रैपिड पेस से इंप्रूवमेंट हो रही है एआई सिस्टम्स में। लेकिन ये भी कहा गया है कि बहुत से कंसर्न्स हैं जैसे जस्टिस, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सबको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। इस डिक्लेरेशन में कहा गया है कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है जो कि एआई को किस चीज़ों से रूट करे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, वेलबींग, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, आईपीआर, प्रिवेसी सिक्योरिटी, इनोवेशन, ट्रस्टवर्दीनेस, ये सब जो है चीज़ें इस फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। एआई इनोवेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है एक प्रायोरिटी की तरह जो है वो बढ़ना चाहिए। और जीपीआई कह रहा है कि हम डाइवर्स मेंबरशिप परसू करेंगे जिसमें लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी इसकी मेंबर्स बने।
ठीक है। अब जो ब्लेचली डिक्लेरेशन जो पिछली समिट में अडॉप्ट हुआ था, उससे कैसे डिफरेंट है ये, या फिर क्या अगर हम कंपैरिजन है देखें, तो दोनों में ही दोनों डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और यूके एआई सेफ्टी समिट डिक्लेरेशन या ब्लेचली डिक्लेरेशन जिसको कहा गया है, दोनों में ही रिकग्नाइज किया गया है कि एआई से रिलेटेड रिस्क तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एआई को जो है बढ़ने ना दें। ठीक है। यूके के जो जो ये ब्लेचली डिक्लेरेशन में तो एक फ्रंटियर एआई, मतलब कि ऐसे एआई मॉडल्स जो कि डेंजरस कैपेबिलिटीज़ जो है पोजेस करते हैं, उनको भी जो है रेगुलेट करने की बात की जा रही है। ठीक है। इंडिया की जो है पोजीशन, इंडिया पहले जो है वो इसके फेवर में नहीं था कि एआई को ज़्यादा रेगुलेट किया जाए, लेकिन जब से न्यू कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया गया ट्राई द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें कहा गया कि एआई को रेगुलेट करने की ज़रूरत है एक रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क के थ्रू, जो हमें एआई को देखना पड़ेगा। तो पेपर जो है इसमें यह भी कहा गया कि कोलैबोरेशन करो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं JN.1 वेरिएंट ऑफ कोविड-19, जो कि पिरोला वेरिएंट की तरह ही दिखता है। ठीक है। तो JN.1, ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो JN.1 जो सब वेरिएंट है कोविड-19 का, वो यूएस और चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अभी एक केस हमें जो है वो डेथ का केस देखने को मिला है केरला में, जो कि हमें इंसाकॉग ने बताया है कि वो JN.1 वेरिएंट से हुआ है। सब वेरिएंट जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि न्यू है, बल्कि कई कंट्रीज़ में कई स्मॉल नंबर्स में देखा गया है। अब इनसेकॉग क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। इनसेकॉग एक नेशनल मल्टी एजेंसी कंसोर्टियम है जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज़ का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2020 में जीनोमिक्स सर्वेलेंस के लिए बनाया था। 28 लैब्स इसके अंदर आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR और ICMR ने इसको मिलकर बनाया है। इसमें जो है जितने भी जो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आते हैं कोविड के, उनके जो है स्टेटस को पे नज़र रखी जाती है और जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाती है। तो अगर हम JN.1 वेरिएंट के बारे में देखें, तो ये 2.86 वेरिएंट जिसको पिरोला वेरिएंट कहते हैं, उसी का ही क्लोज रिलेटिव है, और सिर्फ एक एडिशनल स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है एज कम्पेयर टू पिरोला वेरिएंट। क्या ये वेरिएंट इंक्रीज इन केसेस देगा? ऑफ कोर्स इंक्रीज इन केसेस तो हो रहे हैं, लेकिन यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कह रहा है कि जो अपडेटेड वैक्सीन्स थी उनसे हमने पिरोला इन्फेक्शंस को इफेक्टिवली ब्लॉक कर लिया था। तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हैं कि JN.1 को भी जो है वैक्सीन्स और जो एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस हैं, प्रीवियस इन्फेक्शंस, वो इसको भी रोक लेंगी, JN.1 को भी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो SBI ने रिसेंटली अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट को 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है फॉर सिलेक्टेड टेन्योर्स। तो MCLR क्या है? मिनिमम लैंडिंग रेट, जिसके नीचे बैंक जो है वो लैंड नहीं करते हैं। ये बेसिकली बेस रेट स्ट्रक्चर को इसने रिप्लेस किया है, जो कि जुलाई 2010 से एग्जिस्टिंग था। 2016 में जो है MCLR मेथडोलॉजी जो है वो RBI लेकर आया। MCLR जो है वो बेसिकली कैसे रेट को डिफाइन करता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बैंक की एक लैंडिंग करने में, उसके बेसिस पर जो है बैंक्स अपना कैलकुलेशन करें कि कितने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उनकी, कोई नेगेटिव कैरी ऑन कैश अकाउंट तो नहीं है कैश रिजर्व रेशियो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट उनको कितनी पड़ रही है, टेनोर का प्रीमियम कितना है। ठीक है। उसके बेसिस पर वो कैलकुलेट करते हैं कि लोन का जो है रेट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ठीक है। एक्चुअल लैंडिंग रेट्स जो लोन्स के होते हैं वो MCLR के बाद ही जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। बैंक्स जो है वो टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं अपने MCLR को अलग अलग मैच्योरिटी टेनोर्स के लिए हर मंथ। और कुछ ऐसे लोन्स हैं जैसे फिक्स्ड रेट लोन्स और स्पेशल लोन स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफर करती है, उनको MCLR पे उनकी जो है इंटरेस्ट रेट्स यहीं डिफाइन होते हैं। और अगर आपको ध्यान से समझना है तो MCLR को रेपो लिंक्ड लोन के साथ आप कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है MCLR और बेस रेट में? MCLR बेसिकली एक एडवांस्ड वर्जन ही है बेस रेट का। बेस रेट क्या होता है? मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI सेट करता है, जिसके नीचे कोई भी जो है लैंड नहीं कर सकता। जबकि MCLR एक इंटरनल बेंचमार्किंग सिस्टम है जो बैंक्स खुद ही जो है डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको खुद अपनी वो कॉस्ट पता होती है कितना उनको खर्चा पड़ेगा लैंडिंग में। बेस रेट जो है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर बेसिस है, लेकिन MCLR जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। बेस रेट जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता अगर RBI जो है अपना
रेपो रेट रिवाइज करता है, लेकिन MCLR जो है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि RBI जब रेपो रेट रिवाइज करेगा अपना, तो जो है बैंक्स के लिए या तो मुश्किल हो जाएगा लैंडिंग करना, या फिर आसान हो जाएगा। तो आसान होगा तो ऑफकोर्स MCLR भी कम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम रेट जो है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंसिडर किया जाता है बेस रेट के कंटेक्स्ट में, लेकिन MCLR डिटर्मिन करने में टेनोर प्रीमियम जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया जो है उनको एक पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन की तरह जो है वो चूज़ किया गया है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम में, जो कि टैक्स, जिसमें कि इंडिया जो है वो अपने टैक्स एक्सपर्ट्स जो है वो देने वाला है। तो ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम एक UNDP और OECD का ही जॉइंट इनिशिएटिव है, 2015 में लॉन्च किया गया था। और जो है ऑडिटिंग कैपेसिटी और मल्टीनेशनल्स जो है उनकी कैपेसिटी को कैसे ऑडिट किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसको बनाया गया है। और इसमें ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के भी प्रोविजंस हैं CRS फ्रेमवर्क के थ्रू। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Oman relationship. This topic is important for your international relations. So Oman Sultan has been on an official visit to India. During the meeting with PM Modi, the two sides have announced the third tranche of Oman India Investment Fund worth USD $300 million. So this fund was actually started as a 50-50 joint venture between SBI and Oman Investment Authority. And there was also a discussion regarding the possibility of Oman utilizing India's UPI system. So there was also a discussion about comprehensive economic partnership agreement between the two countries. So if we look at the vast India-Oman bilateral relationship, then Oman is a strategic partner of India. It has been an important interlocutor at Gulf Cooperation Council, Arab League, and Indian Ocean Rim Association fora. And diplomatic relations between the two countries were established in 1955, and this relationship was upgraded to strategic partnership in 2008. So both countries have important economic relationship also. For example, the economic cooperation between India and Oman has been reviewed through the institutional mechanism of India-Oman Joint Commission meeting, and it was found that in the year 2019-20, bilateral trade was about $5.93 billion. Okay. There is also this India-Oman joint or Oman-India joint investment fund, which we have already talked about. And the Indian community in Oman is about 6,24,000. And the basic law of Oman also recognizes the right to different forms of worship, which is a plus point for our migrants who are migrating there. Okay. So the next topic is India-Maldives Water Pact. This topic is important for your international relations. So Maldives government has decided that they will not be renewing an agreement with India, which allowed India to conduct hydrographic surveys in Maldivian waters. So what is this hydrographic survey? So hydrographic surveys are carried out by ships which use methods like sonar technique to understand the various features of a water body. And what is the aim of such surveys? Why are these surveys conducted? As per US NOAA, these surveys help to map out water depth, shape of the seafloor and coastline, location of any obstructions, and physical features of that water body. Okay, so these surveys are done to ensure the efficiency and safety of maritime transportation. So as per a UN study, approximately 50% of coastal states have no hydrographic capability, whereas another 25% have only limited capabilities. Only out of the remaining 25%, India has these adequate hydrographic capabilities. So therefore, of course, there is immense scope for international cooperation in this particular area of hydrography. So when PM Modi traveled to Maldives for a state visit in June 2019, this MOU was signed between India and Maldives regarding cooperation in the field of hydrography between Indian Navy and Maldives National Defense Force. So this survey is in line with India's policy of supporting Maldives to set up this hydrographic facilities within the MNDF, that is the Maldives National Defense Force. So these surveys were done to generate updated navigational charts of these areas. Training was also imparted by Indian Navy personnel to MNDF so as to enable them to use this survey equipment. So why now Maldives wants to end this pact? So at the time when this pact was signed,
President Soli of the MDP was in power, who was more favorable to India, but his successor Mohammad Muizu of PPM is now being seen as more pro-China. He was also part of the India Out campaign, and during the election campaign, he said that agreements with foreign countries must be terminated unless their presence was beneficial to India. It was seen as a reference to India, of course. Okay. So the next topic is Rail Kaushal Vikas Yojana. This topic is important for your economy and your governance section. So Railways Minister has recently clarified that over 26,000 candidates who were skilled under the Rail Kaushal Vikas Yojana will not receive any preferential treatment for jobs within the Indian Railways. Okay, so Rail Kaushal Vikas Yojana is basically it was launched by Railways in September 2021 with the objective of providing technical skills training to youth across different industry relevant trades. So it was launched to address the needs of candidates within the age bracket of 18 to 35, and uh, this Vikas Yojana is focused on industry relevant technical traits to be imparted to the youth. This Under this scheme, training centers have been established at various locations across the country, and it is ensured that relevance and effective training modules also are updated with the program requirements, and it enhances the quality of the training, and the the apprentices or those who are given the training, they are made their training is aligned with the evolving requirements and advancements in the industry. Okay, upon successful completion of this program, certificates are issued which are recognized by the railways, and that's why it helps them, the trainees, to get jobs in the future. Okay. So the next topic is Surat Diamond Bourse. This topic is important for your economy section. PM Modi has inaugurated world's largest corporate office hub, Surat Diamond Bourse, and it is located in Khajod village near Surat. It is the world's largest corporate office hub, overtaking the Pentagon, which was earlier the which earlier possessed the top position. So it is also the global center for trading both rough and polished diamonds. It is the world's largest interconnected building. It features 15 floors in addition to 9 ground towers. It is the country's largest clearance house also. So it has been built in such a way that it minimizes the environmental impact. It has a cutting edge rooftop solar energy project. It also has a radiant cooling system. So it is a environment friendly project. So the next topic is the new post office bill. This topic is important for your governance section. So after being passed in the Rajya Sabha recently, Post Office Bill 2023 was brought to the Lok Sabha for consideration. So it aims to repeal the 125-year-old Indian Post Office Act. So what is the need of this new bill? So at the time when the Post Office Bill of the Post Office Act of 1898 was passed, at that time the postal department was serving merely in the field of mail delivery, but now the post office network today has become a vehicle for delivery of different citizen centric services. So this necessitated the repeal of the previous act and enactment of a new law. As per this new bill, section 9 of the bill says that the center can empower any officer to intercept, open or detain any item in the interest of state security, friendly relations with foreign states, public order, emergency, public safety, etc. The provision also allows the post officers to hand over postal items to custom authorities in case of any doubt. Okay, post office and its officers are not responsible for if something goes wrong, like if there is a loss or wrong delivery or delay during any services provided by the post office. Of course, in case there are specific rules, then the responsibility can be established. The new bill removes all penalties and offences of the 1898 Act, and today, now, if anyone refuses or neglects to pay the charges of post office services, such amount shall be made recoverable as if it was an area of land revenue due from them. Okay, so this bill also removes the exclusivity of central government to act in the post office industry. So, for the first time, private courier services have also been brought into this regulation in this 2023 bill. But there is also criticism. As you can see, several of the draconian provisions of the colonial law have been retained in this new bill. So it does not make much difference uh,
except in certain certain other matters. The bill basically is retaining the erstwhile colonial provisions. So the next topic is GPAI, or Global Partnership on Artificial Intelligence, New Delhi Declaration. This topic is important for your governance and your science and tech section. So Global Partnership on Artificial Intelligence Summit 2023 has adopted this New Delhi Declaration, which attempts to find a balance between innovation and the risk associated with the AI systems. So what are the highlights of this declaration? Of course, this declaration has underscored the need to mitigate risks and promote equitable access to critical resources for AI innovation. This declaration recognizes the rapid pace of improvement in advanced AI systems, but at the same time, it also raises concerns about justice, privacy, intellectual property rights, which needs to be addressed. This declaration is saying that a global framework for use of AI should be rooted in democratic values and human rights, safeguarding dignity and well-being of human population. Personal data protection should be ensured. Applicable intellectual property rights should be protected. Privacy and security should be there. Innovation should be fostered, and trustworthiness should be promoted. Okay, so this declaration also says that AI innovation in the agriculture sector should emerge as a new thematic priority. So this declaration also says that GPAI should have a diverse membership with particular focus on low and middle income countries. Okay, so how does this New Delhi Declaration different or similar with Bletchley Declaration of the UK, which was adopted last year? So this New Delhi Declaration and Bletchley Declaration both talk about safety risk associated with AI, and even the Bletchley Declaration also talked about frontier AI, which is the highly capable generative AI models which could possess dangerous capabilities and can pose severe risks to public safety. Okay, so India's position on regulation of AI has changed. India was not earlier in favor of making any legal intervention in regulating AI, but since the uh, new consultation paper was floated by the telecommunication regulator, TRAI, which said that center should set up a domestic statutory authority to regulate AI in India, and the government should collaborate with international agencies and governments of other countries to form a global agency for the responsible use of AI. Since then, Indian government's position has changed, and they are now in favor of regulating AI. So the next topic is JN1 variant of COVID-19. So this topic is important for your uh, science and tech section. So JN1 variant, which is a sub-variant of COVID-19, is currently spreading in the US and China, and it has also been found in Kerala during the ongoing routine surveillance by INSACOG. So this subvariant is not new. It has been detected in smaller numbers in many countries for several months now. What is INSACOG? So INSACOG is a national multi-agency consortium of genome sequencing laboratories. It was established by Government of India in December 2020 for genome sequencing and genomics surveillance also. So there are about 28 laboratories under this consortium, and this was established by Ministry of Health and Family Welfare to study the or ascertain the status of variants of interest and variants of concern in the country. So JN1 is a close relative of Pirola variant. It just has one additional mutation in the spike protein as compared to Pirola. So can this variant lead to an increase in cases? Of course, there is a possibility that there, as we have seen even in Singapore last week, 56,000 cases were reported of COVID, and US Center for Disease and Control and Prevention is saying that updated vaccines have been effectively able to block Pirola infections. So that's why we are optimistic that available vaccines will provide protection against JN1 also, and immunity from previous infections and immunization with vaccines containing ancestral spike protein are also going to protect against newer variants as well. So the next topic is marginal cost of funds based lending rate. This topic is important for your economy section. So State Bank of India has recently raised its marginal cost of funds based lending rate by up to 10 basis point for selected tenures. So what is this MCLR? MCLR is the minimum lending rate below which a bank is not permitted to lend. So MCLR has replaced the base rate structure which was in place since 2010, but since 2016 MCLR methodology has been introduced by RBI to enhance the effectiveness of monetary policy transmission
and increase transparency in the rate of interest setting procedure. So how this MCLR is calculated? So basically MCLR is determined internally by the bank depending on the period left for the repayment of a loan or the tenor premium. So MCLR is dependent on actual deposit rates, and it is calculated based on four components: what are the marginal cost of funds, and if there is any negative carry on account of CRR, what are the operating costs for servicing this loan, or tenor premium. So banks are basically free to offer all categories of loans at fixed or floating interest rates under the MCLR regime, and the actual lending rates for loans for different categories are determined by the banks uh, based upon MCLR. So banks review and publish this MCLR of different maturities every month for the customers to know about it. And certain loan rates, like those fixed rate loans or special loan schemes which are offered by the government, they are not linked to MCLR. Okay, so there is also comparison here between MCLR and repo linked loan. So like uh, MCLR is linked to bank's cost of funds, whereas repo linked loan is linked to RBI's lending rate. MCLR takes about 4 to 6 months to move after RBI rate cut, but repo linked loan responds immediately to it. RBI rate cuts are not fully passed on to borrowers under MCLR because it depends on how much the cost of loan would be there for a bank. But in repo linked loans, rate cuts are automatically passed on. Uh, MCLR resets in annually for most banks, and repo linked loan resets every 3 months. So MCLR changes by 5 to 10 BPS. Repo linked loans usually change by a few 25 BPS as because RBI makes these changes. So MCLR revises every month, and repo linked loans are revised bi-monthly. MCLR has low volatility, but repo linked loans are highly volatile. Okay. So what is the difference between MCLR and base rate? So MCLR is an advanced version of the base rate. The base rate is basically the minimum rate of interest which has been set up by RBI. No financial institution can lend at an interest rate below the base rate. MCLR is an internal benchmarking system, and the banks are free to set their own lending rates considering a spread factor. And base rate is based on the average cost of funds, but MCLR is based on the marginal cost of fund. Base rate does not get impacted by revision of a repo rate, but MCLR, of course, can get impacted whenever the RBI revises the repo rate. And base rate basically considers the minimum rate of return or profit margin, but MCLR under MCLR, tenor premium is taken into consideration while determining the MCLR. So the next topic is tax inspectors without borders program. This topic is important for your international relations and your economy section. So recently, India has been chosen as the partner administration for the tax inspectors without borders program, and it will provide tax experts for this also. So this tax inspectors without borders program is a joint initiative of United Nations Development Program UNDP and the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD. It was launched in 2015 to strengthen developing countries' auditing capacity and multinationals' compliance worldwide. The this program is relies or the this program focuses on effective use of automatic exchange of information under the common reporting standard framework developed by this program. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.